So in the last topic of today's this week's lecture, we're going to talk about can we take advantage of the problem structure. So let me give you an intuition about okay, what does it mean, what does it entail. Okay, so think about it for a second. So if we have seven variables and all have three values, so what is the domain? What is the total allowable combination that we have to see? So it's very simple to see that it should be 3 to the power 7 because you have three domain size is 3 and you will remember okay, the complexity is e to the power n will be the domain size and another number of variable which is about 2187. So if you can 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3, so you will end up at 2187. Okay, so uh, it is for simple problem we have to observe about 2187 combination. Can we improve upon it? Now listen, look very carefully. You can see now this problem is independent. So Tasmania does not have any influence on the values that you give to either of the variables above. Okay, so we can separate this thing. So now problem has divided into not 3 to the power 6 plus 3 because the independent problem when the problem is independent we just add the possibilities, we do not multiply them. Okay, so it would become about 732 because 3 to the power 6 is I guess 729. So 3, yes, 3, 9, 27, 81, 243, and 320, 729. Plus 3 is 732. Okay. Now, if I observe this thing a bit more closely, so effectively we have one third, we have by just observing a single independent structure, we have reduced the problem size by one third. Okay. Now, if you observe, if we assign a value, so South Australia is constrained with every other problem, every other variable. If we remove it, then this would become a simple tree. It wouldn't have any cycles. So again, so what you do is ना कि आप साउथ ऑस्ट्रेलिया का कोई कलर दे दें रेड अगेन सो एक एक इसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर लें और जो भी आपने कलर दिया उसको यहाँ से माइनस कर दें. तो इनके पास कितनी वैल्यू रह जाएंगी? इनके पास दो, इसके बाद दो, इसके बाद दो, इसके पास दो, इसके पास दो. तो what you would have two five variables with two problem with one 3 for I say and one 3 for T Tasmania. तो आपकी प्रॉब्लम साइज जो है वो तकरीबन सिर्फ 38 रह जाएगा which is about 20 times less than 200 times less than no, 200 not 200 times, it's about 70 times less than the value that almost 60 times 70 times less than the original domain size. Again, if you can look into our problem structure much more closely, we will be able to conjure up this information and use it to our advantage. Okay. So the idea, Janab, if you have D is the domain size and you have the number of variables as n, then the total number of time you have may require with BTS or backtracking search is D to the power n. But if we decompose into sub problems, then we could reduce that problem size to n to the power c d to the power c, which is the worst case scenario, which is quite good as compared to the original problem. So let me give you the let me show you, Janab, why this problem is so serious. Let's suppose you have 80 Boolean variables, okay? And if you do not decompose this subproblem, and if you are computing about 10 million nodes per second, which is quite fast, then it would take about 3.83 million years for it to get solved. Okay, I do not know about you, but I do not have this kind of time with me. Okay, but if we realize that these 2 power 80 can be divided into 4 subproblems of each c power 20, then this would require about zero point 0.4 seconds only to get solved. Now you can see if you can have these clean structures extracted from our original problem, independent structure, then we can solve them very quickly. Unfortunately, not always we will be able to find these independent solution. So what can we do? So we can use other leverages from the graph structure. वो क्या लेवरेज होगा जनाब कि अगर हम किसी तरह से मालूम कर लें कि आप ये अपने ग्राफ को कन्वर्ट कर लें किसी ट्री के अंदर, then the problem to solve a tree is much less than the problem and then the complexity of to solving a graph. And how this thing? So graph is a tree if only two variables are connected by only one path. Again, तो a tree basically graph ही होता है. बट दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो ये साइक्लिक होता है एंड द सेकंड इज जनाब के एवरी नोड इज कनेक्टेड बाय अनदर नोड बाय ओनली सिंगल पाथ, तो देयर कैन नॉट बी टू पाथ्स कनेक्टिंग टू नोड्स. ठीक है, so that's so again, so what the idea is जनाब के first convert your graph to a tree and then solve it. So how do we do this thing? So let's suppose जनाब you have a
CSP like this. So you can make it as a graph. You can say जनाब कि A is my parent node, and the A's node is connected to B, and then B is connected to C, and B is also connected to D, and then D is connected to E, and basically D is connected to F. Now this is our graph structure, tree structure graph, and we can solve this thing in just ND square time, which is polynomial as compared to D to power n, which is exponential. How come? तो पहले तो कन्वर्ट कर लें जनाब इसको एज अ ट्री. आपने कन्वर्ट कर लिया था ट्री. व्हाट यू कैन डू, यू कैन असाइन एवरी वेरिएबल द वैल्यूज. ठीक है, तो हम करेंगे जनाब के सबको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करने. कैसे पता चलेगा? तो जनाब पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से. ठीक है, और देखेंगे जनाब के क्या एफ, लेट सपोज की डोमेन वैल्यूज थी आपके, तो क्या इस वैल्यू के लिए इसके पेरेंट के पास कोई डोमेन, कोई वैल्यू इनकंसिस्टेंट है या नहीं. तो अगेन अगर एफ के पास ब्लू है तो जनाब डी इज नॉट अलाउड. तो आप क्या करेंगे जनाब, की वाली वैल्यू जो है वो डी से हटा देंगे. ओके, एंड देन यू कीप ऑन डूइंग दिस थिंग. ठीक है, रिमूव इनकंसिस्टेंट वैल्यू. तो एफ के लिए डी के बाद जो ब्लू वैल्यू इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, तो अगर एफ के पास डी को मैं ब्लू दे दूंगा तो जनाब इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा. मगर ई के पास तो मैं डी से ब्लू हटा देता हूँ. तो अब मैं ई से आऊंगा तो जनाब ई के पास क्या होगा जनाब, क्योंकि ई के पास, मैं डी के पास ग्रीन है तो इसकी ई के पास ब्लू है, और इसके पास रेड है तो मेरे पास ग्रीन और ब्लू, तो ये कंसिस्टेंट है. अब आप डी के पास आए, डी का पेरेंट बी है, तो अगर ग्रीन है तो यहाँ पे रेड है, और अगर ब्लू है तो यहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों, तो कंसिस्टेंट है. अगर सी के पास आए तो सी का पेरेंट जो है बी है, अगर यहाँ ग्रीन होगा तो यहाँ पे ग्रीन नहीं बचेगा, तो हम यहाँ सी हटा देंगे, ग्रीन हटा देंगे जनाब, ऑलवेज है ब्लू. एंड देन फॉर बी, ए के पेरेंट है तो ए के बाद अगर ब्लू होगा तो बी का तो कुछ नहीं बचेगा, तो हम यहाँ से ए के पास ब्लू हटा देंगे. नाउ मेक अ फॉरवर्ड पास एंड सॉल्व, असाइन द वैल्यूज. तो ए के पास रेड हो गया, बी के पास ब्लू हो गया, सी के पास ग्रीन, डी के पास यू कैन चूज आइदर ऑफ देम, तो यू कैन चूज ग्रीन मे बी. सही है, ग्रीन चूज कर लें. देन ई कुड हैव ब्लू एंड एफ कुड हैव ब्लू. याद रखिएगा ना, एफ और ई आर नॉट कनेक्टेड, ओनली only D and E and D and F are connected. You can work it out yourself, you know, by this complexity and it's very simple to do. Similarly, Janab, you can convert your you can convert your graphs into trees by identifying the fact, Janab, ke, if you can find a cut set and then you can solve the cut set differently from the rest of the tree. And this is what we call cut set conditioning. Okay. So in summary, Janab, we have seen कि Janab CSPs are special kind of such problems, और जहाँ पे the states and they are defined as the number of variables. Our solution is the value assigned to the variables from the allowable domains and all the constraints being satisfied. We saw जनाब किस तरह से बैक ट्रैकिंग सर्च जो है वो यूज करी जा सकती है इसको सॉल्व करने के लिए, और हमने देखा जनाब किस तरह से ह्यूरिस्टिक्स जो हैं they can be used to improve the search. Okay. We also saw कि जनाब कि किस तरह से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को लेके अपनी प्रॉब्लम को इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट वीक यू नो टॉक अबाउट, आई विल मेक अनदर वीडियो टू डेमोन्स्ट्रेट यू द प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स ऑफ CSPs. उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में एडवर्सरियल सर्च को डिस्कस करेंगे. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज.